OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. So we have studied about electrical energy in the previous session. Today we will solve some numericals on the basis of the electrical energy, the power consumption, the resistance, the safe limit of current, on all those concepts which we have studied in the previous session. So let's start this session. There will be multiple number of numericals which we will solve. We'll see the different methodology we will use for solving the numericals. Let's start. Okay, so the first question is for you. You have to test your concept. I always say the numericals are the testing of your concept which you have studied. If you are able to solve the numericals, means what? You have grasped the concept. And if you are having the trouble to solve the numericals, means somewhere the concept is yet lacking. So, okay, so this is the testing time. This is the testing session for you. Let's start. Oh, that question is current through a 12-volt filament of a lamp current through a lamp is connected to a current through a 12-volt filament of a lamp is connected to a 12-volt accumulator having negligible resistance. Is 3 ampere. Okay. Now you have to calculate, first of all, you have to calculate resistance of filament. एक ये आप calculate कर लो. Resistance of filament. Second, you should calculate power of lamp. And the third one, energy consumed in 5 hours. Okay, so you got the question. What does it says? It says that current through a 12-volt filament of a lamp is connected to a 12-volt accumulator having the negligible resistance is 3 ampere. जो current है वो कितनी है? 3 ampere. Okay, and you have to calculate the resistance of the filament. Current through a 12-volt filament of a lamp. Okay, so here I is given to you. I is equal to 3 ampere. V is equal to 12 volt. Okay, resistance of filament R is equal to V upon I. By Ohm's law we know V is equal to IR. So R is equal to V upon I. V 12 upon 3 is equal to 4 ohm. The next one is power of the lamp. So P is equal to VI. We already know. So V is 12 and I is 3. So it will be 36 watt. Power की unit watt. The next one is energy consumed in 5 hours. Okay. Energy consumed in 5 hours. Okay, so इसको अगर हम किलोवाट में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगी 36 into 10 to power minus 3 किलोवाट, है ना.
एनर्जी हम किलोवाट आवर में निकाल लेते हैं. सो W इज इक्वल टू P इंटू T. एनर्जी का फार्मूला W इज इक्वल टू P इंटू T. व्हाट इज P? 36 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 5 आवर्स. ओके, इंटू 5. 180 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 किलोवाट आवर. 180 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 किलोवाट आवर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.18 किलोवाट आवर. ओके, सो दिस इज द वेरी इजीएस्ट वन. जो सबसे इजी न्यूमेरिकल था वो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, एंड आई होप कि आपने भी सॉल्व कर लिया होगा. अब हम स्लोली स्लोली थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, और सारे न्यूमेरिकल्स का एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं या बोर्ड के क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वी विल ट्राई टू सॉल्व ईच क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट टाइप. सो दिस वन वाज वेरी इजी फॉर यू, and let's see the another question. Okay, so here is another question, and it says that a bulb is marked 100 watt 220 volt, means this is the rating of a bulb, and an electric heater is marked 2000 watt 220 volt. Okay, this is the rating of electric heater. What we have to do? Calculate the ratio of resistances of these two devices. Okay, so जो first device है bulb, उसकी rating क्या है? उसके लिए V है, V1 मान लिया हमने. V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट, एंड P कितना है या P1 कितना है? 100 वाट. P1 इज इक्वल टू 100 वाट. ओके, और हीटर के लिए रेटिंग क्या है? P2 जो है दैट इज 2000 वाट, एंड द वोल्टेज इज V2 which is 220 volt. This is for bulb and this is for heater. Okay, calculate ratio of resistances of these two devices. So हमें क्या निकालना है? इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा फॉर दिस केस? सो फॉर बल्ब, बल्ब के लिए हम निकालते हैं पहले कितना होगा. ओके, आर हम वी ऑलरेडी नो P इज इक्वल टू वी आई. अगर आप फार्मूला भूल जाते हो तो फिर फार्मूले को दोबारा से हम इस ये मेन फार्मूला जो है ये याद होना चाहिए, इससे कोई दूसरा फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं. कैसे? P इज इक्वल टू वी आई, और हमें निकालना है रेजिस्टेंस, और हमें दिया हुआ है V, यानी V को तो हमें रखना ही है, I को चेंज कर देना रेजिस्टेंस की फॉर्म में. सो व्हाट वी कैन डू? P इज इक्वल टू V इंटू I को क्या लिख सकते हैं? ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R. सो दिस विल बिकम V स्क्वायर बाई R. ओके, सो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, है ना. ये फार्मूला हमें मिल गया, इससे हम निकाल सकते हैं. तो R1 कितना हो जाएगा? R1 is equal to V square means 220 into 220 upon P, which is 100. This 0 will be cancelled out. 22 multiplied by 22 कितना आएगा? 484 ohm. 484 ohm for bulb. Now for heater, P R2 is equal to P2 V square upon V2 square upon P2. This will be V2 स्क्वायर अपॉन P2, है ना. यही यहाँ पे V1 स्क्वायर अपॉन P1 था, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं R1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P1, ये जो निकाला है. Here R2 is equal to V2 square upon P2, so R2 is equal to V2 square 220
multiplied by 220 upon P2 is 2000. This 0 will be cancelled out, this 0 will be cancelled out. 11, 10, 2 5s are 10, 11. 121 upon 5. 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 2s are 10. 24.2 ohm. This is R2. Okay. So, is it right? Once again, 220 multiplied by 220 upon 2000. This will be cancelled out, and 20. 2 10s are 20, 11, and then again 11, 2 5s are 20, 11, 2 5s are 10, 11 into 11, 1, 11, 121 upon 5, 5 2s are 10, 5 4s are 20, and 5 2s are 10, 242. Okay. Now what will be the ratio of the resistances? Means R1 upon R2 is equal to, R1 कितना है 484 upon R2 24.2. Okay, how many times it will go? 2 times. Okay, 242 2s are 2, 484 and 0 means R1 upon R2 is equal to 20 upon 1, or we can write 21 का रेशियो. ये रेशियो हो जाएगा 20 और 1 का. Okay, now what is the second one? How does the power voltage rating of a device help us to decide about the type of leads? Okay, पावर रेटिंग का क्या एडवांटेज है? हमें अगर पावर रेटिंग किसी इक्विपमेंट की पता है तो what is the advantage of this? So if we know the power rating, we can calculate the current drawn from the appliance, है ना? उस अप्लायंस से कितना, वो अप्लायंस कितना करंट ड्रा करेगा, दिस वी कैन कैलकुलेट. सो बल्ब में देखते हैं कितना करंट ड्रा करेगा. I1 is equal to, what is I1? V1 upon R1. So V1 is there, V1 is 220 and R1 is 484. कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करिए. 110, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4. Okay, again 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 5s are 10. Okay, 11 1s are 11, 1, 11 5s are 55. Okay, so it will be approx 11 5 by 11. कितना ये आ जाएगा? 5 by 11 it means कितना होगा? 0.4 and it will remain 6, so 5. So approx 0.45 ampere I1. And what will be I2? Similarly, we can calculate I2, which will be V2 upon R2. V2 is given 220. 220 upon R2 is 24.2. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अप्रॉक्स 10 के आसपास या 9 पॉइंट समथिंग. ओके, 9 पॉइंट समथिंग आएगी. तो हमने मान लिया 9 पॉइंट कुछ एम्पियर की है. यू शुड कैलकुलेट इट. ओके, सो अब हमें कैसे हेल्प मिल रही है? हमें मालूम है I1 की वैल्यू, यानी जो बल्ब है वो सिर्फ 0.45 एम्पियर की करंट ड्रा कर रहा है, जबकि जो हीटर है वो 9 पॉइंट समथिंग की करंट ड्रा कर रहा है. यानी हीटर के लिए हमें बहुत ही थिक वायर चाहिए, जबकि बल्ब के लिए बहुत ही थिन वायर चाहिए. यानी वायर कैसा हमें यूज करना है, वी विल एबल टू आइडेंटिफाई, फॉर विच वी हैव टू परचेज द थिकर वायर एंड फॉर विच वी हैव टू परचेज द थिनर वायर, है ना. तो वायर का जो हमारा एक्सपेंस है वो
अब कंट्रोल हो सकता है, वरना हम दोनों के लिए कैसा खरीदते, दोनों के लिए हम एक जैसा वायर खरीद लेते और हमें महंगा भी पड़ सकता था, और या फिर हो सकता था कि उससे हीटर जो है ऑपरेट ना हो पाए, है ना, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड चाहिए होता है उसके लिए कि मिनिमम इतनी करंट ये वायर ड्रा कर सकता है। तो अब यहाँ पे हमें करंट पता है, तो हमें रेटिंग पता है कि ये वायर कितनी करंट बियर कर सकता है। इससे क्या होगा कि हम अकॉर्डिंगली वायर खरीद सकेंगे कि किस इक्विपमेंट के लिए कितनी रेंज का वायर हमें चाहिए होगा। सो दिस इज द एडवांटेज of knowing the rating of any device. This question has been asked in your board examination. Okay, let's see one more question. Here it is for you. This question says that there are two bulbs. Okay, एक A बल्ब है और दूसरा B, और इनकी रेटिंग दी हुई है। पहले की रेटिंग है रेटेड 100 watt 120 volt. This is a rating for A. What is the rating for B? This is rating for A. Now we will write the rating for B is 10 watt and 120 volt, 120 volt. Okay, these are the ratings of bulbs A and B respectively. Okay, these bulbs are connected in parallel connection, connected in parallel through 120 volt. Okay, these bulbs are connected in parallel through 120 volt source. जो source है वो 120 volt का है. Now find current drawn from each bulb, and second one is which bulb will consume more energy. So here is the numerical. It says that there are two bulbs A and B rated 100 watt XO 120 volt and 10 watt 120 volt respectively. They are connected in parallel connection through 120 volt. Okay, parallel through 120 volt. Now we have to calculate the current drawn from each bulb and which bulb will consume more energy. So first we have to calculate the current drawn from each bulb. I is equal to V upon R. Can we calculate R from this rating for bulb A? For bulb A, V is equal to 120 volt and P is equal to 10 watt. So what will be the value of R? R is equal to V square upon P. Hence 120 into 120 upon 10. 1440 ohm. Okay, this is for bulb A. Now for bulb B, for bulb B, R is equal to V square upon P, means what? 10 watt 120 volt, and
For A it was 100 watt and 120 volt. So 100 watt for 100 watt, this will be another 0, it will be cancelled by this. So this 144 ohm. Got. For bulb A, the rating is 100 watt and 120 volt. So P will be 100 watt. This will be 100 watt. So when we put the value in place of 10, 100, then these both zeros will be cancelled out. 12 into 12, 144 ohm. Now for bulb B, R is equal to V square upon P. V is 120 and P is 10. So 120 into 120 upon 10. So it will be cancelled out. It will be 1440 ohm. These are, suppose, R1 and R2. Okay. Find current drawn from each bulb. For bulb A, current for bulb A will be I1, and I1 is equal to V1 upon R1. V1 is 120 volt for both bulbs. So 120 upon R1 is 144. ठीक, ये कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 22, 12 5 जा 60, 12 7 जा 72, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60, 5 by 6 means 0.8 and 2 approx ampere. 0.82 ampere. What will be the value of I2? I2 is equal to V2 upon R2. 120 upon R2 is 1440. This will be cancelled out. 2 6 ja 12, 2 7 ja 6 1 ja 6, 6 2 ja. So 1 by 12, 0.08 and 0.082 or 3, we can write something like 2. Okay. So this is for I1, the current is 0.82 ampere, and for I2 it is 0.082 ampere. This is the current drawn from each bulb. Now which bulb will consume more energy? How can you know which bulb will consume more energy? So very simple. For the bulb A, energy required or power it requires is 100 watt, and for bulb B it requires 10 watt. So definitely this will consume more energy. So bulb A will consume more energy. ओके, क्योंकि ज्यादा पावर का है इसलिए ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा. जितनी ज्यादा पावर का होगा उतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा. Okay, so this is another type of question. Now we'll solve one more question and then we will wind up the session. Let me solve one more question. So here is another question, and it says calculate the electrical energy in kilowatt hour consumed in a month in a house using 3 bulbs of 100 watt. So the information we have to note is that 3 bulbs of 100 watt each and 2 fans of 60 watt. 2 fans of 60 watt each. Okay, if the bulbs and fans are used for an average 10 hours, okay, if the cost per unit is 5 rupees, calculate cost per month. Okay, so this is the question. So first of all, we have to see there are 3 bulbs of 100 watt and 2 fans of 60 watt. 3 bulbs of
100 वाट। सो कितना एक्सपेंस होगा इसकी वजह से पावर, ओके कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी इसकी वजह से। 3 bulbs of 100 watt मीन्स 300 वाट, ओके P1 मान लिया, P1 जो कि ड्यू यूजिंग थ्री ड्यू टू बल्ब्स जो पावर कंज्यूम हो रही है, जो पावर एक्सपेंड हो रही है वो 300 वाट है, ओके 100 watt each and two fans of 60 watt due to two fans of 60 watt इसकी वजह से जो पावर कंज्यूम हो रही है वो P2 है 120 वाट। सो टोटल P कितना हो गया 300 प्लस 120 मीन्स 420 वाट एक्सपेंस हो रहा है इन दोनों की वजह से, बल्ब और फैन की वजह से। कितना 420। इफ द बल्ब्स एंड फैंस आर यूज्ड फॉर एन एवरेज 10 आवर्स, एक दिन में कितना यूज हो रहे हैं, यूज ऑफ बल्ब एंड फैंस इज इक्वल टू 10 आवर्स पर डे। सो टोटल पावर कितनी हो गई अब, हेंस नेट पावर कंज्यूम्ड इन ए डे, एक दिन में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है 420 इंटू 10, 420 इंटू 10 4200 watt. This is the power consumed in one day. So power consumed in 30 days. है ना, ये एक दिन की पावर कंज्यूम्ड है और हमें पूरे महीने का बिल देना है ना, तो 30 days for 1 month there will be 30 days. So power consumed in a month means 30 days is equal to 4200 into 30, 3 to the 6, 3 4 the 12 and into 10 to power 3 watt, or we can write it 126 kilowatt equal to 126 किलोवाट, है ना, इतनी पावर कंज्यूम हो रही है एक महीने में, ओके। सो नाउ पर यूनिट का बिल है 5 रुपीज, तो इतनी पावर का बिल कितना होगा, एक यूनिट का बिल है 5 रुपीज। सो एक्सपेंस फॉर 126 किलोवाट पावर इज इक्वल टू 5 इंटू 126। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पर यूनिट एक्सपेंस is equal to 5 rupees. So expense for 126 kilowatt power, 5 into 126, 630 rupees. So this will be the expense for 1 month. एक महीने में इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। What we did, हमने नेट पावर निकाल ली 3 बल्ब्स की वजह से, 3 बल्ब्स ऑफ 100 वाट मींस 300 वाट, तो इसकी वजह से एक्सपेंस हो रहा है, और 2 फैंस ऑफ 60 वाट मींस 120 वाट इन फैंस की वजह से एक्सपेंस हो रहा है। सो टोटल कितना हो गया 420 वाट एक्सपेंस हो रहा है एक दिन में, एक दिन में भी नहीं, फॉर 1 आवर, और टोटल कितना यूज हो रहा है एक दिन में 10 आवर्स। सो 10 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4200 वाट 1 डे में एक्सपेंस हो रहा है। और हमें 30 डेज के लिए निकालना है, देयर इज अ 30 डेज इन अ मंथ, सो फॉर अ मंथ वी मल्टीप्लाई 4200 to 30
and we got 126 into 10 to power 3, which can be written as 126 kilowatt. 126 kilowatt is the total expense of power, and 1 unit of power is of 5 rupees. So 126 kilowatt unit of power will be of how much rupees? 5 into 126. So it will be 630 rupees. Okay. So this was another type of question which you can solve easily. So should we close, or we should take one more example? What do you want? Okay, we'll take one more example. Then we will end up. Okay, so here's the question, and it says that a geyser has a rating of 2 kVA and 240 volt. Now, अब यहाँ पे जो रेटिंग दी है वो क्या दी हुई है? 2 kVA and 240 volt. अब ये kVA क्या है? What is this kVA? किलो वोल्ट एम्पियर. वोल्ट एम्पियर क्या है? Volt is the unit of voltage. A ampere is the unit of current. Means VI. VI. And what is VI? P is equal to VI. Power. So this is the unit of power. है ना, VA की जगह पे हम पावर की यूनिट भी रख सकते हैं. So we can write here kilowatt. This is nothing but power. P is equal to VI. V और I की यूनिट की फॉर्म में रख दिया गया है. Okay, so we can write kVA as kilowatt. Okay, got ना? kVA, V क्या है? वोल्टेज की यूनिट, A क्या है? करंट की यूनिट. So VI and VI is equal to P. So P की जो यूनिट होती है वो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं. P की यूनिट वाट, पावर की यूनिट वाट. So 2 kilowatt. So P is given 2 kilowatt. V is equal to 240 volt. Okay, volt. V is equal to 240 volt. What is electrical energy consumed by it in kilowatt hour? Electrical energy W is equal to, क्या होता है W is equal to P into T. क्या टाइम दिया हुआ है? By it in kilowatt hour and joule if it is used for 90 minutes. टाइम कितना दिया है? 90 minutes. T is equal to 90 minute. ओके, हमें पावर किलोवाट में दी है तो इसको भी आवर में चेंज करना पड़ेगा. किलोवाट आवर तभी आएगा. तो इसमें कितने आवर हो जाएंगे? 90 डिवाइडेड बाई 60. ओके, मीन्स 60 1 जा 60, 1.5 आवर है ना, 1.5 आवर. सो W इज इक्वल टू 2 into 1.5 means 3 kilowatt hour. 3 kilowatt hour. ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है, W 3 किलोवाट आवर. किलोवाट आवर और जूल में भी हमें इसको दिखाना है. अब जूल में दिखाने के लिए आवर को सेकेंड में चेंज कर दें और किलोवाट को वाट में चेंज कर दें. सो इन 1 किलोवाट देयर आर 10 to power 3 watt, and in 1 hour there is 3600 watt second. Okay, so we can calculate it. 3 6 ja 18, 108 into 10 to power 3 plus 2 यानी 5. या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1.08 into 10 to power 7 वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड को ही हम जूल भी बोलते हैं. तो ये जूल में हो जाएगी. दिस विल बी इन किलोवाट आवर और ये जूल में.
The next is, if the cost of electricity is 4.50 rupees per commercial unit. अब commercial unit क्या होती है? You should know what is the commercial unit. एनर्जी मीटर में जो हम कॉमर्शियल यूनिट लेते हैं, जो बिजली का बिल आता है आपके घरों में, वो किस में आता है? उसमें कौन सी कॉमर्शियल यूनिट होती है? किलो वाट आवर, जूल नहीं होती, किलो वाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर का जो एक्सपेंस है दैट इज 4.50 रुपीज। तो 3 किलोवाट आवर का एक्सपेंस और कॉस्ट, कॉस्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kilowatt hour is equal to 4.50 rupees. So cost of 3 kilowatt hour is equal to 3 into 4.50. So 13.50 rupees. This will be the cost of 3 kilowatt hour. Okay. So these were few numericals on the basis of इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उससे रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनसे। अच्छा, एक क्वेश्चन सेफ करंट लिमिट पर भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो भी हम देख लेते हैं, भूल रहा था। सो लेट सॉल्व, दिस विल बी द लास्ट वन, ओके, फॉर श्योर। So here's the question, and it says that if the bulb is rated 100 watt and 220 volt, what will be the resistance and safe limit of current through the filament of bulb while glowing? तो हमें क्या पता करना है कि बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा उसके फिलामेंट का, एंड व्हाट विल बी द सेफ लिमिट ऑफ करंट जो इस बल्ब से हम पास करा सकें, वो या बल्ब को हम सप्लाई कर सकें, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ दैट सेफ लिमिट. These two things we have to measure. So first we will see what will be the resistance of this bulb. So R ये हमें निकालना है एंड सेफ लिमिट निकालनी है करंट की. These are the two things we have to measure. So first we will measure R, and it is given P is equal to 100 watt, V is equal to 220 volt. So P is equal to VI. This we already know. Okay. Now you have to calculate R, and V is given to you. So P is equal to V into V by R. So R is equal to V square upon P. Okay, what is V square? 220 multiplied by 220 upon P. What is P? 100. These 0 will be cancelled out. 22 multiplied by 22 will be 484 ohm. This will be the resistance. Now it is asking what will be the safe limit of current. So I is equal to safe limit of power upon safe limit of potential difference or voltage V. I is equal to P upon V. P is given 100 watt and V is 220. कितना आएगा? Can you calculate? Approx 0.5 ampere. So this will be the safe limit of current which we can pass through this bulb, the filament of this bulb. Okay, so these were few questions on the basis of the concept which we have studied of electrical energy. इन क्वेश्चंस, इन न्यूमेरिकल्स के अलावा आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो सके. एंड ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव कवर्ड. सो नाउ आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस सेशन ओवर हियर. Hope that you got the concept as well as the better understanding how to solve the numericals. So we'll meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great day.